तो ये फर्स्ट पॉइंट हम कर रहे थे कि अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, पीपल वर आर्यंस वर पेस्टोरलिस्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैटल रेयरिंग, रेयरिंग मतलब पालना, रेज करना, कैटल रेयरिंग, इकोनॉमी कर रहे हैं हम। Cattle rearing was their main occupation. पानी तो नहीं पी लेना था। हाँ, सॉरी। Early Vedic Aryans were pastoralists. Cattle rearing, pastoral मतलब domestication of animals, ठीक है। मेन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ occupation ਸੀਗਾ, ठीक है, पशु चारदे सीगे, ठीक है। They reared, REARED, they reared cattle, 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 sheep, goats and horses. And horses, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऋग्वेदा, a large number of words, WORDS, words are derived from the word go, which means cow. ये ऐसे नहीं होता वैसे, GEU, गाओ, which means cow. A large number of words are derived from the word gao, which means cow. ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए। Wealthy person was known as, wealthy person अमीर आदमी, गौमत, क्योंकि उसके पास गाय बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। wealthy person was known as गौमत and daughter was known as दुहित्री, जो गाय का दूध निकालती है, दुहित्री, डॉटर, दुहित्री, which means one who milks the cow, मतलब गाय का दूध निकालती है, one who milks the cow, दुहित्री। जब दूध काटती है डॉटर, अपनी फैमिली से लेडीज दूध नहीं काटती है, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड गवेषणा, ये टर्म सारी बहुत इंपॉर्टेंट। द टर्म गवेषणा literally means search for cows. Comma, but it also means battle,
but it also means battle, since many battles were fought over cattle. Cattle. पंजाबी च आपां की कहने हैं दोता। कौन दा दोता? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੋਤਾ। ਦੋਤਾ मीन्स ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਦੋਤਾ। ठीक है, next, the cows were thought of as provider of everything, कि जो गाय है वो हमें हर एक चीज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, क्यों करेगी, कैसे करेगी? हाँ, और हाँ, अच्छा, सब चीजों का एक ही वर्ड, इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है ना? तो यहां पे अभी काउ की हाईएस्ट इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपके पास 2000 का नोट है तो वो 2000 का नोट आपको सब कुछ देगा, जितनी वैल्यू है 2000 की उतनी तो देगा ही। ठीक है, अगर नंबर ऑफ 2000 के नोट ज्यादा है तो उतनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है? काउ की। ठीक है, तो काउ आपको सब कुछ दे सकती है। ठीक है, बार्टर सिस्टम में जो मर्जी आप काउ के साथ एक्सचेंज कर लो। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन कि काउस वर थॉट ऑफ प्रोवाइडर ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट, prayers were offered पशुओं की गिनती को बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रेयर्स की जाती थी। प्रेयर्स वर ऑफर्ड फॉर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैटल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैटल। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द अबव, जो ऊपर हमने सारी चीजें लिखी, ऑल द अबव एंड many more references show that all the above and many more references show that cattle breeding was the most important economic activity of the Rigvedic Aryans. Activity of Rigvedic Aryans. Rigvedic Aryans. Next point, the evidence of agriculture. The evidence of agriculture in comparison with pastoral activities in the early portion is very less. Next point,
A few references, बहुत कम references हमें मिलती है. A few references show that they had knowledge of agriculture. They had knowledge of agriculture and practiced it to supplement their food requirements. Next point. Apart from cattle rearing, के बिना a small scale cultivation, comma, people were engaged in many other economic activities. Next point, hunting, carpentry, tanning, 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 weaving, chariot making, rath banana, chariot, CHARIOT, chariot making, metal smeltery, metal को पिघलाना, metal smeltery, SMELTRY, etc. were some such activities. Next point, the products of these activities were exchanged through barter, BARTER. Next point, however, cows were the most favored medium of exchange. Next point, the priests, PRIESTS, the priests received cows, किसके? PRIESTS, priest, पंडित जी जो होते थे, priests received cows, horses, and gold ornaments as fee, FEES, for performing
sacrifices. ठीक है जी. Now next आ जाओ, changes in later Vedic phase in economy. ठीक है, यहां हेडिंग बना लो, इकोनॉमी इन लेटर वैदिक फेज. ठीक है, तो अब लेटर वैदिक फेज में एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन. ठीक है, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हर एक स्टेज पे एग्रीकल्चर के पूजा करवाई जाती थी. ड्यूरिंग लेटर वैदिक फेज, during later Vedic phase, agriculture became the mainstay, MAINSTAY, the mainstay of the Vedic people. During later Vedic phase, agriculture became the mainstay of the Vedic people. Many rituals, प्रथम रह गया कहीं आपका, एग्रीकल्चर became, तो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो, इतने औखे होके पीछे पीछे को देख रहे हो. The agriculture became the mainstay, MAINSTAY, the mainstay of the Vedic people. फास्ट तो नहीं हो रहा. नेक्स्ट पॉइंट, many rituals were introduced to initiate the process of agriculture. Next point, the buffalo had been domesticated. The buffalo had been domesticated for agricultural purposes. Underline करिए. This animal was extremely useful. This animal was extremely useful in plowing the swampy, SWAMPY, दलदल टाइप वाली जो जमीन होती है, स्वैम्पी, SWAMPY, स्वैम्पी लैंड, LAND. Next point, the god Indra acquires, Indra, INDRA, acquires new title, that is inverted commas में लिखे, Lord of the plow, हल का राजा, हल का देवता. In this period, next point, the number of varieties of plant food increased. ठीक है, वो प्लांट्स जो फूड के लिए यूज होते थे, उनकी वैरायटी और नंबर इंक्रीज हुए. अपार्ट फ्रॉम बार्ले, अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ बार्ले उगाया जाता था मेनली.
apart from barley, now people now cultivated wheat, rice, pulses, millets, sugarcane, etc. Next point. The items of दान, DAN, किसी को दान देना. The items of दान and दक्षिणा, इसमें क्या फर्क है दान और दक्षिणा में? चीज देनी है, दक्षिणा पे भी उसकी दाम वगैरह किसी चीज की आप जब रिन्यूमिनेशन दे रहे हो, फीस दे रहे हो, है ना, दैट इज दक्षिणा. हाँ, दान अपनी इच्छा से, हाँ, काम की वजह से. ठीक है. दान एंड दक्षिणा इंक्लूडेड कुक्ड राइस, अंडरलाइन करिए, कुक्ड राइस. Thus, with the beginning of food production, हाँ जी, next point बना लो. Thus, with the beginning of food production, agricultural produce began to be offered in the rituals. पहले सिर्फ गाय दी जाती थी, ठीक है, अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. तिल, TIL, जो तिल होते हैं ना, आज भी हम यूज करते हैं, ब्लैक और सेसमे सीड्स जिनको हम बोलते हैं. तिल, फ्रॉम विच the first widely used vegetable, from which the widely used vegetable food oil was derived. Vegetable food oil was derived increasingly, came to be used in ritual. आजकल हम देसी घी यूज करते हैं ना, जब यज्ञ करवाते हैं. हाँ जी, कहां से रिपीट करूं कि शुरू से करूं? तिल, कॉमा, फ्रॉम विच the first widely used vegetable food oil was derived increasingly, came to be used in rituals. Next point, very important point. The main factor in the expansion of the iron culture during later Vedic period was, हाँ जी, क्या होगा, क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर और टूल्स. व्हाट टाइप ऑफ टूल्स? कौन सी टेक्नोलॉजी?
और कुछ? बर्तनों के साथ सिविलाइजेशन कैसे एक्सपैंड होगी? एक्सपैंड का मतलब फैली, ठीक है। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ना कि ये हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, ठीक है। आर्यन सेंट्रल एशिया से आए तो सबसे पहले कहां पे सेटल्ड हुए? पंजाब में, ठीक है। फिर पंजाब से दे मूव टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, और धीरे धीरे करके ये असम तक पहुंच गए। तो ये जो एक्सपेंशन हो रही है यहाँ पे, ये किसके कारण हो रही है? हाँ जी, कैसे? लड़ाई से? और कुछ? व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेस? एग्रीकल्चर टूल्स की वजह से, यस। यूज ऑफ आयरन। एग्रीकल्चर से पहले यहाँ पे क्या है? फॉरेस्ट लैंड। दिस इज ऑल योर फॉरेस्ट मेनली, ठीक है। अगर ट्राइब्स भी यहाँ पे रह रही है तो वो भी जंगलों में रह रही है ना, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट को क्लियर करके उस लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। आज जो हम देखते हैं यहां से, आप पंजाब से लेके पूरा यूपी क्रॉस करके यूपी बिहार यहां तक चले जाओ तो आपको खेती खेत मिलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड मिलती है सारी, ठीक है ना। तो ये एग्रीकल्चर लैंड उस समय जंगलों से कवर थी, ठीक है। और जंगलों को कैसे साफ किया गया? विद द यूज ऑफ आयरन, ठीक है। तो आयरन के यूज से ये जो एक्सपेंशन हुई, ठीक है, हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन जो हुई दैट इज बिकॉज ऑफ द आयरन, यूज ऑफ आयरन, ठीक है। हाँ जी। अब आयरन से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स भी बने, ठीक है, और जो आपके टूल्स भी बने जो पेड़ काटने के काम आते, ठीक है। हाँ जी, देखिए, द मेन फैक्टर इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को अंडरलाइन करो, एक्सपेंशन ऑफ आयरन कल्चर during the later Vedic period was the beginning of use of iron। अंडरलाइन करिए, बिगिनिंग ऑफ यूज ऑफ आयरन को अंडरलाइन करिए, अराउंड 1000 BC, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमने जो डिवाइड किया था 1500 से 1000 BC, दिस इज अर्ली वैदिक, एंड 1000 से 600 BC, दिस इज लेटर वैदिक, ठीक है। तो यहां पे आके यूज ऑफ आयरन गॉट स्टार्टेड, ठीक है, और ये लेटर वैदिक पीरियड जो है ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द ऋग्वेदिक पीपल न्यू The Rigvedic people knew of a metal called हाँ जी, हाँ हाँ, टिन। अभी टिन बहुत कम यूज हो रहा है, ठीक है ना। टिन मेनली यूज होता है हड़प्पा वैली पे। आयरन जो है दैट इज बेटर देन टिन, ठीक है ना। तो कुछ चीज जब आपके पास बेटर आ गई तो जो उससे जो पिछली चीजें वो आप धीरे धीरे छोड़ते गए, ठीक है। हाँ जी, आयास, द टर्म आयास अंडरलाइन करोगे, हर एक टर्म को अंडरलाइन करना आपने, ठीक है। द ऋग्वेदिक पीपल न्यू ऑफ अ मेटल कॉल्ड आयास विच वॉज ईदर कॉपर और ब्रोंज, ठीक है। तो टर्म आयास इज यूज फॉर कॉपर और ब्रोंज। नेक्स्ट पॉइंट, इन लेटर वैदिक लिटरेचर ayas was qualified
with Ayas was qualified with Shyama or Krishna. Which means black iron. So the term which was used for black iron was Shyam or Krishna. Next point. Archaeology has shown that iron began to use that iron began to be used around 1000 BC, which is also the period of later Vedic literature. Next point. The northern and eastern parts of India, जहां पे आर्यंस माइग्रेट किए, the northern and eastern part of India to which Aryans later migrated receive more rainfall than northwestern part of India. More rainfall than northwestern part of India. As a result, this region is covered with thick rainforests, which could not be cleared by copper or stone tools used by early Vedic people. Next point. The use of iron tools now thank you. The use of iron tools now help people to clear the dense rainforests large tracts of forest land, TRACTS, रास्ते, large tracts of forest land could be converted into cultivable pieces of land, cultivable pieces in relatively lesser time.
Next point. The iron flow lesser time, कम time में, LESSER, lesser time. The iron flow could turn the soil from deeper portions making it more fertile. This process seemed to have begun. कब शुरू होता है? This process seemed to have begun during the later part of the Rigvedic period, but the effect of iron tools and implements became evident only towards the end of later Vedic period. ठीक है? Now next point. There has been continuous increase in the population. ठीक है? अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ ऑक्यूपेशंस बढ़ेंगे. The increasing number and size of painted graveyard settlements. पेंटेड ग्रेवियर्स क्या होता है कि जो वो पॉटरी बनाते थे, ठीक है, तो उसको वो ग्रे कलर से पेंट करते हैं. ठीक है, सो दैट इज पेंटेड ग्रेवियर. Settlements in the Doab area shows this. What is Doab? Area between the two rivers. Area between the two rivers. Next point. With the passage of time, the Vedic people also acquired better knowledge of seasons, manuring. Better knowledge of the seasons. बेटर नॉलेज ऑफ सीजन्स, मौसमों की, कौन से मौसम में कौन सी फसल उगेगी, कॉमा, मैन्योरिंग, MANURING, and irrigation. All these developments resulted in substantial
all these developments resulted in substantial enlargement of the settlements. हाँ जी, अब क्लियर है आवाज? Substantial enlargement of settlements. यदि ग्रेवियर पोर्ट्री जो है ये कुछ यूनिक है। नहीं, यूनिक नहीं। क्या होता है कि हर एक पीरियड में अलग अलग तरह की पॉटरी बनती है, ठीक है? पॉटरी तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, उसको पेंट करना इज डिफरेंट हो जाता है। एक रेड ग्रेवियर पॉटरी होती है, एक ग्रेवियर पॉटरी है, ठीक है ना? तो उसको जस्ट कलर से हम डिफरेंशिएट करते हैं, किस पीरियड में कौन सा कलर्स यूज किए जाते थे, उसी कलर के यूज पे ही उसका नाम रखा है, ठीक है? क्या लिखा था आपने? Settlement such as Hastinapur, and देखो आवाज नहीं जा रही। Kaushambi towards the end of the later Vedic period, ठीक है? लेटर वैदिक पीरियड में आते आते जो सेटलमेंट्स है वो और ज्यादा इलैबोरेट हो, लेटर वैदिक पीरियड। These settlements slowly began to acquire characteristics of towns. Such towns inhabited mainly inhabited by chiefs, princes, chiefs, 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 princes, PRINCES, priests and artisans. Supported by the peasants who could spare for them some part of their produce, voluntarily or involuntarily. Voluntarily or involuntarily. ठीक है? And this was known as Bali. ठीक है? Early Vedic period में Bali was voluntarily offerings. ठीक है? जो कुछ भी लोग राजा को अपनी मर्जी से गिफ्ट्स वगैरह देते थे, जो चढ़ावा चढ़ाते थे, that was known as Bali. ठीक है? Voluntarily. बाद में बाली was made as a tax. ठीक है? कि ये टैक्स आपने देना ही देना है,
ठीक है, इट वॉज मेड नेसेसरी। सर ये वही है ना, ये लैंड वाला टैक्स है या नो नो नॉट लैंड, पावर? कोई भी ऑफरिंग आप दे रहे हो, नहीं, बाद में जो बनाया गया। नहीं, बाली वॉज नॉट लैंड टैक्स, ठीक है, टैक्स था बट नॉट लैंड टैक्स, ठीक है। ये अपनी मर्जी से जो आप राजा को देते हो, ठीक है, या जब राजा आपके एरिया में से गुजर रहा है, फौज गुजर रही है, ठीक है, तो अपनी मर्जी से जो आप ऑफरिंग उसको देते हो, दैट इज नोन एज बाली। हाँ, पहले ये अपनी मर्जी से होता था, दो चाहे ना दो, अभी लेदर विधिक में मतलब ये कंपल्सरी ये कंपल्सरी हो। टैक्सेस बढ़ गए ना, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो टैक्सेस भी तो बढ़ेंगे ना। अभी कंपल्सरी है या नहीं मतलब लेटर वेदिक में कंपल्सरी है, अर्ली विधिक में हाँ, अर्ली वेदिक में नहीं। तभी लिखा ना हमने वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। जब इनवॉलंटरी चीज हो जाती है तो वो फिक्स हो जाती है, ठीक है। इनकम टैक्स कौन देना चाहता है? इनवॉलंटरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिलीजन, ठीक है, लास्ट पार्ट रिलीजन। तो इनवॉलंटरी की बात करें क्या लिखा था हमने इनवॉलंटरी के बाद? लूजनेस वाली बली बोलते हैं। हाँ, ठीक है, ये टर्म लिख लो। रिलीजन एंड लेटर विधिक हाँ, अर्ली वैदिक पीरियड है, पहले अर्ली वैदिक फिर लेटर वैदिक। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड मींस अर्ली वैदिक पीरियड। ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड, the prayers were made to God mainly for physical protection and material protection, ठीक है, क्योंकि ट्राइब्स आपस में लड़ रही हैं, तो इसलिए फिजिकल प्रोटेक्शन भी चाहिए और मटेरियल प्रोटेक्शन। हाँ जी, हमारे सामान को बचा के रखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द ऋग्वेदिक गॉड्स वर जनरली, ऋग्वेदिक गॉड्स वर जनरली चाहिए दोस्तों, the Rigvedic gods were generally associated with natural forces. The Rigvedic gods were generally associated with natural forces such as rain, sun, rivers, etc. Main gods were Indra, Agni, Varun, Mitra, M-I-T-R-A, Mitra, Dayus, D-Y-A-U-S, Dayus, D-Y-A-U-S, Dayus, D-Y-A-U-S, Dayus, Kushan, P-U-S-H-A-N-A, Kushan, Yam, Y-A-M-A, Yam, Soma, S-O-M-A, Soma, etc. are all male gods. Kushana, Poo, peace.
10th, Usha, are all male gods. Next point, in comparison, there were few goddesses such as Ushas, 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 Saraswati, Prithvi, etc., which occupy secondary position. ठीक है, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो मेल गॉड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, which occupies secondary position. सर इन नेचुरल फोर्सेस को कुछ बोलते थे, इन नेचुरल फोर्सेस को कुछ बोलते थे सर। क्या बताओ, क्या लिखा हुआ है? कोई भी राम से ढूंढ लेना। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। रित रित ऋत, ऋत, सारे नेचुरल फोर्सेस, ऋत के ऋतु, natural force is known as rit. It Rit. means everything is nature. ऋत, ओके, ठीक है, ये भी नोट कर लो। Next point. Since the Rigvedic people were engaged in wars, ठीक है, ट्राइब्स की आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी. Since the Rigvedic people were engaged in wars, since the Rigvedic people were engaged in wars with each other, they worshipped Indra as a god. He is the most frequently mentioned God. सबसे ज्यादा इसका जिक्र किया गया है ऋग्वेद में. He is the most frequently mentioned God in the Rigveda. He carried a thunderbolt. He carried a thunderbolt and was also respected as thunderbolt, B-O-L-T, and also respected as a weather god, W-E-A-T-H-E-R, मौसम का देवता, weather god who brought rain, जो बारिश लेके आता है. He carried the thunderbolt, bijli, and was also respected as weather god who brought rains, R-A-I-N-S, बारिश लेके आता है. Next point. Marus, M-A-R-U-T-S. Marus, the god of storm, S-T-O-R-M. Tufan, Aandhi. Aided Indra in the wars. मारुत the god of snow. Aided. ठीक है, इंद्र का साथ देता है मारुस. Aided, A-I-D-E-D, aided Indra in the wars
Next point, Agni, the god, the fire god was Agni, the fire god was the god of the home and was considered as intermediary And sir, and was considered as intermediary between men and gods. इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं तो अग्नि में सब कुछ डालते हैं, ठीक है। तो अग्नि इट ऑलवेज गोज अप, ठीक है। तो भगवान तक हमारा जो मैसेज लेके जाती है दैट इज अग्नि। नेक्स्ट पॉइंट, सोमा, SOMA. Soma was associated with plants and it was also plant from which also a plant जिससे शराब बनाई जाती थी, from which an intoxicating juice was extracted. This juice was drunk. This juice was drunk and sacrificed. जब sacrifices की बलि दी जाती थी तब सोमा पिया जाता था। सर ये वही होता था ना, मदिरा टाइप। मदिरा टाइप इंटॉक्सिकेटिंग ना, ठीक है। और जब बलि देते हैं तो एक जानवर की बलि नहीं देते, नंबर ऑफ एनिमल्स आर टू बी किल्ड, ठीक है। तो वो एक जो बंदा होश में है वो नहीं मार सकता इतने जानवरों को, ठीक है ना। तो उसको इंटॉक्सिकेट पहले करना ही पड़ेगा और जानवरों को भी इंटॉक्सिकेट कर देते, ठीक है ना। हाँ, ताकि वो होश में ना रहे, क्योंकि जानवरों को जिसको भी आप मारोगे, चाहे वो बंदा है चाहे वो जानवर है, उसको पता चल जाता है कि काम होने वाला है, ठीक है ना। तो तब वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली हर कोई चीज़ अपने आप को बचाएगी ना, ठीक है ना। तो इसलिए जो जानवर होता है उसको भी इंटॉक्सिकेट करते हैं ताकि ये अपनी सेंसेस में ना रहे और जल्दी से काम ना हो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट गॉड आ जाओ, वरुण। Varun. Another important deity, DEITY, was the keeper of cosmic order. ब्रह्मांड को की रक्षा करने वाला वरुण। Cosmic order means Brahman. Next, Pushan was the god of roads. Pushan was the god of roads, herdsmen, जो पशुओं को चराते हैं, and cattle, पशुओं का god. Pushan was the god of roads, सड़कें, herdsmen and cattle. Next one. All these gods were invoked at yajnas or sacrifices. Invoked. उनकी पूजा की जाती थी, उनको बुलाया जाता था। And yajnas and Sacrifices. Yajnas or sacrifices. Next point. These sacrifices were organized
by the chiefs of the tribes and performed by priests. Next point, very important point, last point. During the entire Vedic phase, entire मतलब early and later both. During the entire Vedic phase, people did not construct temples. मंदिर नहीं बने थे क्योंकि जितने भी गॉड है वो नेचर से रिलेटेड. Nor did they worship any statue. जैसे आज हम स्टैचू की पूजा करते हैं तब मूर्ति पूजा नहीं होती. These features of Indian religion developed much later. Now later Vedic पे आ जाओ. In the later Vedic period, as agriculture developed, it brought changes in the attitude. It brought changes in the attitude towards God and goddesses too. Towards God and Goddesses too. T-double-O. इसके साथ ही continuous interactions with the local non-Aryan population also contributed these changes. Thus, Vishnu and Rudra is Shiva. Thus, Vishnu and Rudra became extremely important which were smaller deities, D-E-I-T-I-E-S, in the Rig Vedic period. ठीक है, जो ऋग वैदिक पीरियड में छोटे देवता थे वो अब मेन सीन पे आ गए. ठीक है, इंद्र वरुण ये सब जो है ये सेकंड नंबर पे है. ठीक है, नेक्स्ट another important feature was the increase in the frequency,
the frequency and number of yajnas. अब यजना बहुत सारे परफॉर्म करने शुरू हो गए, ठीक है, और बहुत जल्दी, ठीक है. फ्रीक्वेंट मीन्स जल्दी से जल्दी, नंबर मीन्स बहुत ज्यादा. फ्रीक्वेंसी और कौन सा क्या था? Frequency and number of the yajnas which generally ended with the sacrifices of a large number of animals. Next one. This was probably the result. अब यजना इतने ज्यादा क्यों होने लग गए? क्यों होंगे? एग्रीकल्चर में जैसे थे वहाँ पे जो कौन सा स्टेप होता था तो वो योजना वगैरह करते थे. और सर नेचुरल कैलेमिटीज से बचने वगैरह के लिए. और क्वेश्चन क्या है? है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जो यजनास हमने लिखा ना कि नंबर ऑफ यजनास यूज्ड टू इंक्रीज, क्यों इतनी जल्दी यजनास क्यों परफॉर्म होने लग गए? नंबर ऑफ यजनास क्यों बढ़ गए? पॉपुलेशन बढ़ी. पॉपुलेशन का इससे क्या लेना देना है? सर गॉड्स की तरह ज्यादा भी नहीं. कौन उनको बोलेगा कि यज्ञ करवाओ? प्रीस्ट कौन है? ब्राह्मण. क्योंकि जो ब्राह्मण क्लास है उसका खाना पीना कहाँ से चल रहा है? पूजा पाठ से. ठीक है, तो जितने पूजा पाठ लोग ज्यादा करवाएंगे उतना ही उनको रोटी पानी चलेगा. ठीक है ना? वाह, कब जी? अंधविश्वास बढ़ा देंगे. हाँ, यस. ठीक है, ये बन गया तो ये कराओ, ये हो गया तो वो कराओ. हमारी लाइफ में 16 स्टेप्स होते हैं बर्थ से लेके एंड तक, जिनमें यज्ञ करवाना, जिसमें मैरिज भी एक है, डेथ हो गया, मैरिज, बर्थ, मैरिज, डेथ, ये तो तीन नहीं है. ठीक है. फिर जैसा आपने कल किया था, वो जब जनेऊ डालते हैं सर एक मुंडन में, एक बार जब बच्चे को सॉलिड फूड खिलाते हैं, अब तो ये चीजें कम होगी ना. ठीक है, अदरवाइज हर एक स्टेप पे ही आपको यज्ञ करना है. यज्ञ करोगे तो सैक्रिफाइस भी करोगे. ठीक है, और जो सारा चढ़ावा चढ़ेगा वो किसको जाएगा? पंडित जी को. ठीक है ना. तो पंडित जी कुछ प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे. हाँ, वो सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. ठीक है जी. तो जितने ये रिचुअल्स बढ़ेंगे उतने ही उनकी इनकम बढ़ेगी. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा था आपने? हाँ, this was probably the result of the growing importance of the Brahman class and efforts to maintain their supremacy and efforts to maintain their supremacy in the changing society. Next one. These yajnas brought to them a large amount of wealth. Large amount of wealth in the form of दान and दक्षिणा. दान and दक्षिणा
in the form of large energy. Next point. By the end of later Vedic period, people began to oppose these sacrifices. People, sir. People began To oppose these sacrifices. Next point. A large number of cattle and other animals which were sacrificed at the end of Yajna, a large number of cattle and other animals which were sacrificed at the end of Yajna must have been hampered. उनको रोकना पड़ा. Must have been hampered the growth of economy. उनकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ में रुकावट आई. Hampered. क्यों रुकावट आएगी? अवेलेबिलिटी चाहिए, उससे पावर जो भी कैटल वगैरह है वो कम होते रहेंगे. सिर्फ वो जो खाओ वगैरह में हाँ. घास उनका हाँ. वो भी कम होएगा सर उससे. अच्छा, फिर उससे इकोनॉमी कैसे इफेक्ट होगी? सर मिल्क प्रोडक्ट कम हो जाएंगे और एग्रीकल्चर में. अब हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज मेनली एग्रीकल्चर. ठीक है, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हमें एनिमल्स चाहिए. हाँ, यूज ऑफ एनिमल इज मोर एग्रीकल्चर इकोनॉमी. ठीक है, अगर अब एनिमल्स को आप मारोगे तो डायरेक्टली आपकी इकोनॉमी हैम्पर होगी. ठीक है ना. अब इन रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करना शुरू किया होगा. ठीक है, तो अब इसके बाद क्या स्टार्ट होगा? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगी? रिलीजियस मूवमेंट. ठीक है, ये सारी चीजें, दीज ऑल थिंग्स, फालतू के रिचुअल्स, ठीक है, फालतू का पैसा, ठीक है, एनिमल किलिंग जिसकी जरूरत नहीं है, जिसकी ज्यादा जरूरत एग्रीकल्चर में है. ठीक है, ऑल दिस फैक्टर्स लेड टू द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ठीक है, उसके जब कॉजेस करेंगे तो इनको भी मेंशन करेंगे. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए. ठीक है, अ नंबर ऑफ cattle and other animals which were sacrificed at the hand by God. Next one. Therefore, a path of good conduct and self-sacrifice was recommended. And Self-sacrifice was recommended for happiness and welfare in the last sections of Vedas called Upanishad. Called Upsc. Next one. The Upanishad contain two basic principles. The Upanishad contain two basic principles of Indian philosophy. That is karma and
इंडियन फिलोसफी, ठीक है। फर्स्ट इज कर्मा एंड सेकंड क्या होगा? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ठीक है। तो उपनिषद कहते हैं कि रिचुअल्स नहीं करने, सैक्रिफाइसेस नहीं करने, कोई लोड नहीं है उनकी। कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ठीक है। तो जैसे आप ये कर्म करोगे वैसे ही आपको अगला जन्म मिलेगा। आपके यही होता है ना, ठीक है। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है रिलीजन का कि आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है, तो जो आत्मा है वो फिर दोबारा से जन्म लेती। विष्णु के 10 अवतार है ना, दैट इज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सोल है वो नहीं मरता, फिर दोबारा से जन्म ले लेता है, ठीक है। और जो हमारे कर्म है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आज आप अगर अच्छी फैमिली में पैदा हुए हो, ठीक है, यहाँ बैठे हो, ठीक है जी, स्टडीज अफोर्ड कर पा रहे हो, ये आपके कुछ पिछले अच्छे कर्म हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए पूजा पाठ किया करो ताकि अगला जन्म आपका और अच्छा हो, ठीक है। इसीलिए जो पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है, अगला जन्म सवार देंगे, इस जन्म में नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है, बस 2 लाइन्स रहेगी अब। The Upanishad contain 2 principles, ठीक है। One is karma and second is transmigration of soul, that is rebirth based on past deeds. Last one. According to these texts, real happiness lies in these texts मतलब Upanishad. According to these texts, happiness lies in getting moksha, that is freedom from the cycle of birth and rebirth.